All right, guys. So welcome back to this lecture where we are going to revise the C programming language. Now take this lecture very seriously because if you understand things which I'm going to teach you in this lecture, then trust me, you will have very little doubts when I teach you Java and data structures. So let's start the revision of the C programming language. Now I hope you have a notebook with you. So in your notebook, give the first heading. Give the first heading computer memory. Just give this heading, not the second one. Come on, give the heading computer memory. Or don't give the second heading, give only the first one, computer memory. All right, now let's talk a little about the computer memory. Okay, please pay attention because we are going to deal this with many times. Now what happens is when I say computer memory, okay, whether I say computer memory or cell phone memory, it is basically one and the same. Now, what is this memory? So in your cell phone, in your computer, you have a hard disk, you have RAM, and this hard disk and RAM are basically used for storage of data. So the memory in your computer, the memory in your cell phone is used for data storage. Now let's try to draw a block diagram of the computer memory of the cell phone memory. So what happens is the memory of the computer looks like this. The memory contains a sequence of locations where each location is called a byte. I repeat, the computer memory contains a sequence of locations where each location is called a byte. Now your question will be, what is a byte? So a byte basically contains 8 bits. I repeat, a byte basically contains 8 bits. So the next question could be, what is a bit? So a bit is either a 1 or a 0. So within the computer memory, you will have locations like these where you will have sequence of ones and zeros. So there will be 8 ones or zeros like 1 1 0 0 1 1 1 0 like this. Okay. So this is how the computer memory looks like. Moreover, if you attended yesterday's data structure lecture, then you must have come across one more thing. If you did not attend, no problem. Listen to me carefully. What happens is every byte in the computer memory, every location in the computer memory has an address. The way our house has an address, that way every byte in the computer memory has an address, and that address is a hexadecimal number. By the way, a hexadecimal number is a number which can have any symbol from 0 to 9 and then from A to F, where A to F actually stands for 10 to 15. So A is 10, B is 11, F is 15, that way. So what I was saying is that every byte in the computer memory has an address. So for example, the address of this byte could be 102A, this could be 102B, 102C, 102D, and so on and so on. Now, if you look at this computer memory a little carefully, see, what did I tell you? I told you that a computer memory contains a sequence of locations called bytes. One byte contains 8 bits, and a bit is either a 1 or a 0. Now, if you think a little, you will realize one very important thing. Now, listen to this very carefully. See, what happens is in your computer memory, you store several things. By the way, when I say computer memory, it is applicable to cell phone memory also. So in your cell phone memory, you store many things like you store audio, video, photographs, text file, this, that, many things. But what happens is that whatever you stored in the memory, whatever you store in the memory, it is eventually stored in the memory as a sequence of ones and zeros. So even if you have stored a photograph in your computer memory, when that photograph is stored in the computer memory, it is stored as ones and zeros. So that is something which you should always remember. Now do one thing, draw this diagram which I have drawn in front of you. Okay. So draw this diagram which I have drawn in front of you, and you can write some notes in your own words. Notes like the computer memory contains a sequence of locations where each location is called a byte. One byte contains 8 bits. Every byte has an address which is a hexadecimal number. So come on, copy this and write some notes in your own words. Come on, do that.
All right. Now give the second heading, data types and declarations. Come on. The second heading, data types and declarations. All right. So in this heading, I'll be covering two things. One is data types and declarations. And why I'm covering these things together? Because they are related to each other. Now, let's understand what it is. Now, I'm sure many a times you have seen a statement like this. Int space x. Okay. You have seen a statement like this. Float space a comma b, like this. Okay. Now these statements, okay, int x, float a comma b, these statements are called declarations. Okay, तो आज के बाद ये भूलो मत कि statements को declarations बोलते हैं. Now in these statements, the word int which you see, the word float which you see, these words are called data types. They are definitely keywords, but basically they are called data types. So one thing which you will clearly realize is that data types are used inside the declarations. I repeat, that data types are used inside the declarations. तो एक काम करते हैं, पहले डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अभी आज का जो लेक्चर है, that is basically a revision lecture, or I will say it is a refresher lecture. So we will not go into too much of detailed concepts and technical discussion. Okay, we will touch the things briefly, so that we don't have problems in our semester 3. That is the only aim over here. Okay, so in our semester 3 in Java or data structures, we'll be broadly using 4 data types. One is int, okay, another is float, another is char, and sometimes double, which is nothing but similar to float. Okay, now what does the int mean? So int means integer. So now what are integers? Simple. Integers are numbers without decimal points. So numbers like 23, numbers like 462, they are all integers. So whenever you want to deal with such numbers, I repeat, whenever you want to deal with such numbers, 23, 462, you should use the data type int. Int stands for integers. Now, what is float? So float basically means real numbers, okay? Now, what are real numbers? Real numbers are numbers having decimal point. So numbers like 2.3, numbers like 46.2, they are basically floating point numbers, also called real numbers. So here onwards, whenever you want to deal with such numbers, you will use float. Now, as I told you, we are doing all these things so that we don't have problems in semester 3. So let's talk from that point of view, semester 3 point of view. Now the question is, when will you use integer? When will you use float? So the concept is very simple. See, if you have a program where we are dealing with money, okay, that money could be student fees, that money could be cost price of the article, or that money could be anything else, discount or anything else. So whenever we are dealing with money, okay, we use the data type float. Okay. Similarly, when do we use integers? So I'll give you some examples. Let's say you want to store the number of students in a particular school. So if you want to store number of students, number of this, number of that, okay, number of anything, then we use data type int. Why? Because if you want to store number of students in a particular school, that number of students can never be 2.5. It can never be 7.8. It will be a whole number. That means integer. Okay. So depending on the application, you should decide whether to use int or float. Then there is one more data type called double. And this double is nothing but, I will say, extension of float. This double is nothing but extension of float. That means if you want to store floating point numbers, you can use the data type double. The difference between float and double comes in the range. Okay. So what happens is the range of double is much larger than float.
That means double can store numbers which are much bigger than what float can store. But as far as our syllabus is concerned, it is okay if you use float. We don't need to use double, but still you should know the data type double. Now, finally, what is char? So char stands for single character. Whenever you want to store any single character, you use the data type char. So look at your keyboard. Look at your keyboard right now. Whatever single character you can see on the keyboard, if you want to store them in the program, you should use the data type char. So that single character could be M, it could be 8, it could be hash. And one more thing is that whenever we deal with single characters, we always put them in single quotes. We always put them in single quotes. So this is a single character. Now, apart from these data types, you should also be aware of what is a string. By the way, in C language, there is no data type called string, whereas in Java, there is a data type called string. Okay. So let's talk from C language point of view for time being. So in C language, there is no data type called string. So that means you cannot write a statement like this. See, you cannot write a statement like this, string space S1. If you write a statement like this will report an error because there is no data type called string. Okay. So then how to create a string in C language? Very simple. All you need to do is create an array of characters. So I'll write something like this, char S1 of 10, like this. So what is the meaning of this statement? This statement means that S1 is an array of 10 characters. In other words, S1 can now contain maximum 10 characters. So now I can write a statement like this. I can write S1 is equal to data. Okay. Now, and every string basically comes in double quotes. So that is why I have put this S1. That's why I have put this data in double quotes. So remember one thing, in C language, there is no data type called string. But if you want to create a string, you will have to create an array of characters. So anyway, what you do is, now in today's lecture, I will tell you to write notes in your own words. Okay. So what you do is you can copy all this and you can write some notes in your own words. So come on, I give you 3 minutes for all this. Come on, start. Sir, would you repeat the last part? About what? Sir, how to create string? If you want to create a string in C language, you need to create an array of a character. Okay. So for example, देखो ये statement में हमने क्या किया है? हमने एक array create किया है called S1, which contains 10 characters. तो अगर हम ऐसा लिखेंगे ना तो S1 will now become a string. Okay. By the way, instead of 10, you could have written anything, 20, 30, 40. बट ये कैर ही होना चाहिए कि स्ट्रिंग का डेफिनेशन ही ये है कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. सो नाउ ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं S1 इक्वल टू डेटा, S1 इक्वल टू जावा, एनीथिंग व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स. एनी डाउट्स? No, sir. ओके.
Okay, let's move further. Now let's talk about declarations. Okay, अभी आज के बाद अगर तुम ऐसा कोई स्टेटमेंट देखते हो, आज के बाद अगर तुम ऐसा कोई स्टेटमेंट देखते हो ऐसा, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन. अब ऐसा स्टेटमेंट का मतलब क्या? तो वेरी सिंपल. So in a declaration, you will always have a data type. You will always have a data type followed by a space, and after that you will have one or multiple variables separated by a comma. Separated by a comma. So ये statement को declaration क्यों बोलते हैं? Because in this statement we are declaring something to the compiler. We are informing something to the compiler. उसको declare कर रहे हैं. जैसे ये statement मैं लिखता हूँ, तो मैं compiler को बोल रहा हूँ कि देख भाई, I want a variable x whose data type should be int. यानी ये जो x है ये integer store करेगा. मैं कंपाइलर को बोल रहा हूँ कि I want two variables a and b जो float store करेगा ऐसा. Now there is something very 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 important which you should understand this. और अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, इसको तुमको हमेशा हमेशा याद रखना है, इसलिए ध्यान से सुनो. प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव. ओके, if you're in comms and IT, you will never ever forget the next thing which I'm going to tell you. In fact, बाद में मैं तुमको डिक्टेट करके लिखवाऊंगा. अभी पहले सुनो. अब बात ये है कि whenever the compiler comes across any declaration, it will do the work of memory allocation. I repeat, whenever the compiler comes across any declaration, it will do the work of memory allocation. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कंपाइलर ये स्टेटमेंट देखेगा, ये कंपाइलर क्या करेगा? By the way, every integer requires minimum 2 bytes. I will not say minimum, I'll say every integer requires 2 bytes in computer memory. तो कंपाइलर जब ये वाला स्टेटमेंट देखेगा, तो कंपाइलर क्या करेगा? विद इन द कंप्यूटर मेमोरी इट विल allocate 2 bytes फॉर दिस वेरिएबल x. तो ये जो 2 बाइट इधर दिख रहा है एट लोकेशन 102a 102b, ये x के लिए allocate हो जाएगा. लेटर ऑन समझो मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा, x इक्वल टू 5. तो ये जो 5 है वो ये 2 बाइट्स में स्टोर हो जाएगा ऐसा. इनफैक्ट तुम जो भी x को वैल्यू दोगे वो उन 2 बाइट्स में स्टोर होगा. सो वंस अगेन रिमेंबर अ सिंपल एंड इंपॉर्टेंट थिंग. whenever the compiler comes across any declaration, it will do the work of memory allocation. यानी उस वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट कर देगा. Now look at this statement in which I have declared two variables m and n. अभी समझो इधर मैं ऐसा लिखता हूं, मैं लिखता हूं int m इक्वल टू 8. ठीक है, एंड कॉमा n को मैं ऐसे ही रखता हूं. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये डिक्लेरेशन तो है ही, but now it becomes declaration and initialization. I repeat, it becomes declaration and initialization. Why initialization? Because now I'm also initializing the variable m. Acha, now I have a question for you. Tell me one thing, in this statement, a total of how many variables are declared? Tell me. It's okay if you're wrong. Tell me how many. Two, m and n. And how many are initialized? One. हाँ, तो एक है ना सिंपल बात हमेशा याद रखो, जब भी इनिशियलाइजेशन होता है तो उसमें पहले डिक्लेरेशन होता है. ओके, इनिशियलाइजेशन नेवर हैपेंस विदाउट डिक्लेरेशन. तो m and n both are declared, but only m is initialized. ठीक है, अब फिर से अपने वर्ड्स में तुमको नोट लिखना है. अब तुम क्या क्या लिखोगे पहले सुन लो एक बार, लिखने स्टार्ट मत करो. सो फर्स्ट यू विल राइट दिस स्टेटमेंट. ओके, या फिर first you will write this statement. Okay, you will write this statement, these two examples. All right, then below that you will write whenever the compiler comes across any declare, or let's do one thing, I'll dictate this because it is important. चलो पहले ये दो स्टेटमेंट कॉपी करो, ये दो स्टेटमेंट कॉपी. Okay, now after this, right,
whenever the compiler comes across any declaration, it will do the work of memory allocation. For example, now look at the left side of the screen. Look at the left side of the screen. अब for example के नीचे ना तुम ऐसा दो स्टेटमेंट लिखो, int a semicolon and then a equal to 5 semicolon and फिर इधर x के बदले खाली a लिखो. Now copy this entire left hand side, int a semicolon, a equal to 5 semicolon, and then the diagram. Copy the left hand side. Copy this. Now copy this statement, this one. अच्छा, अब इसके एक नोट लिखो. In the above statement, m and n are declared. M and n are declared, but only m is initialized. But only m is initialized. All right, give the next heading, number 3, if and if else. If and if else. All right, guys. So I'm sure you know that the if and the if else are used many a times in the program. So let's understand them in a little bit of detail. अभी जो if else है ना, इसको बहुत बार बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें ना कंडीशन यूज होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज होता है. इसका जनरल फॉर्मेट ऐसे होता है, इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, या फिर ऐसे इफ एक्सप्रेशन 1 स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2. Now I'll explain you this in general. By the way, general format का मतलब ये होता है कि this statement, I mean this entire thing is just the format given in English. It is not in C language. Okay. अच्छा, now I'll explain you this general format. तो तुमको ये अपने आप समझ में आ जाएगा. अब ये if statement कैसे काम करता है या if else statement कैसे काम करता है? सबसे पहले it will check whether this expression 1 is true or false. By the way, this expression 1 is normally a logical expression. Logical expression is that expression which is either true or false. जैसे कि ये a less than b, जैसे कि ये a equal to b, तो इसको बोलते हैं logical expression. Whereas something like a plus b, something like c minus d, these are called arithmetic expressions which are not true false. इनका एक arithmetic value होता है. जबकि ये जो होता है ना, अब जो मैं बोलने वाला एकदम ध्यान से सुनना, स्पेशली इफ यू आर नॉट माय स्टूडेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये जो दो एक्सप्रेशंस है ना, ये दोनों, इनका आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स होता है. सो व्हेन यू आर राइटिंग a लेस देन b, यू आर एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन टू द कंपाइलर. आई रिपीट, ये मेरी बात ध्यान से सुनना. व्हेन यू आर राइटिंग a लेस देन b, यू आर एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन टू द कंपाइलर. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है, is a less than b. तो कंपाइलर क्या करेगा? या तो ट्रू बोलेगा या फॉल्स बोलेगा. is a equal to b. Okay, so logical expressions are those expressions which are either true or false. They are basically kind of questions. So coming back over here,
ये जो एक्सप्रेशन 1 है ना, वो या तो ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। अगर तुमने एल्स नहीं लिखा तो ये तो और भी सिंपल है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, ठीक है, दैट्स ओके। एनीवे, कॉपी दिस मच। अगर कोई डाउट है तो पूछो। So what about only A equal to B? Only A equals, not double equals to. वो फिर असाइनमेंट हो गया, वो असाइनमेंट हो गया, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं है। Okay sir. Like वो A को अगर A 5 है तो वो B को भी 5 कर देगा. हाँ, ए नहीं, ए इक्वल टू बी में ए चेंज होगा ना, बी थोड़ी चेंज होता है। हाँ. उल्टा उल्टा बोल रहे हो। Okay. All right, copy this. Any doubts? ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, अगर नहीं हुआ तो प्रिंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी स्क्रीनशॉट लेते हो बुक में जगह छोड़ो। ठीक है ना, एवरीबडी कॉपी दिस क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबडी कॉपी दिस क्वेश्चन। Okay, listen. The question says write the program segment to display maximum of two given unequal integers a and b. अब पहले ना इधर क्वेश्चन समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी दो इंटीजर्स है ए एंड बी, और वो दोनों अनइक्वल है, ऐसा अज्यूम करो। तुमको सिर्फ क्या करना है, चेक करना है कि मैक्सिमम कौन सा है, और जो मैक्सिमम है उसको डिस्प्ले करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। एनी डाउट्स विद द क्वेश्चन? अच्छा, अब इधर हम एक छोटा सा प्रोग्राम सेगमेंट लिखेंगे, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो वी कैन ईदर राइट दिस, ध्यान से देखो क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी printf परसेंट डी ए एल्स printf परसेंट डी बी, और इसके बदले में वी कैन राइट दिस। अभी अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो ब्लू कलर है ना वो है इफ एल्स, और जो रेड कलर है ना वो है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो या तो तुम एक इफ एल्स लिखो, या तो तुम दो इफ लिखो। अच्छा, अभी एक काम करो, इसको अपने ना इफ एल्स के जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करो तो तुमको समझेगा। कंपेयर दिस विद द जनरल फॉर्मेट ऑफ द इफ एल्स जो तुमने नोटबुक में लिखा है। तो बोलो विद रिस्पेक्ट टू द जनरल फॉर्मेट ये क्या है? कम ऑन, आंसर द क्वेश्चन। एक्सप्रेशन 1, ये क्या है? स्टेटमेंट 1, वेरी गुड। ये क्या है? स्टेटमेंट 2। हाँ, तो देखो अब ये सेल्फ Statement two. एग्जीक्यूटिव है। If a greater than b is true, then printf a will execute because a is maximum. If a greater than b is false, then printf b will execute because b is maximum if this condition is false. तो सिंपल है, ग्रेटर है तो a को डिस्प्ले करो, वरना b को डिस्प्ले करो। अभी अगर तुमको इफ एल्स नहीं लिखने का है तो तुम ये दो रेड कलर को देखो। ओके, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, ये पहला इफ है, ये दूसरा इफ है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी है क्या, हाँ है, तो तुम इसको डिस्प्ले करो। समझो ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर दो। अब वो नीचे आके चेक करेगा बी ग्रेटर देन ए है क्या, है, तो फिर वो इसको डिस्प्ले कर देगा। एनी डाउट्स? क्लियर? डिस्कशन इज नॉट ओवर। कोई डाउट है तो प्लीज विदाउट एनी रिलक्टेंस बोलो। Any doubts? Acha, now whatever we are going to talk, it is very important. Okay, we are going to talk about something called, indentation.
सो इफ यू हैव बीन माय स्टूडेंट्स ऑफ सीपी तो तुमको पता है ये चीज क्या है. नाउ तुमको ये भी पता है कि इंडेंटेशन इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम यू शुड यूज इंडेंटेशन. अभी इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है पुशिंग ऑन द राइट साइड टू शो डिपेंडेंसी. आई रिपीट, उसका मतलब होता है पुशिंग ऑन द राइट साइड टू शो डिपेंडेंसी. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? तो ये समझने के लिए काम करते हैं. ये जो ब्लू स्टेटमेंट तुमको दिखता है ना, ये जो ब्लू कलर तुमको दिखता है ना, इसको अभी खाली थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं. ठीक है, सो विल राइट इट लाइक दिस. अभी तुम इस तरह से लिखो, यू राइट इट वेदर लाइक दिस और यू राइट इट लाइक दिस. दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों का आउटपुट सेम आएगा. बट होगा क्या कि अगर तुम इस तरह से लिखते हो ना, तो इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल टू द एग्जामिनर एंड यू विल एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स. देखो, हमेशा एक बात याद रखना, यू नेवर गेट मार्क्स फॉर राइटिंग करेक्ट आंसर्स. ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं. You never get marks for writing correct answers. You get marks. You get marks for writing those answers which are correct and easy to understand. तो अगर एग्जामिनर को तुम्हारा आंसर्स फटाफट समझ में आ रहा है ना, तो तुमको मार्क्स भी फटाफट 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 मिलते जाएगा. और अगर उसको तुम्हारा आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुमको कम मार्क्स मिलेगा. ये हमेशा याद रखो. अच्छा, एनीवे, अभी इंडेंटेशन की बात करते हैं. तो इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है पुशिंग ऑन राइट साइड टू शो डिपेंडेंसी. अब ये जो ब्लू कलर है, देखो इधर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट लाइन पे ये इफ लिखा. फिर सेकेंड लाइन पे जब मैं ये वाला प्रिंटफ लिख रहा हूं ना, मैंने प्रिंटफ इधर लिखा, देखो इधर लिखा ना, मैंने इधर लिखा. what I did is I brought the printf under if and I pushed it a little on the right side. That means this p is not under this I. फिर मैंने क्या किया, else को दूसरे लाइन पे लिया. फिर से मैंने क्या किया, ये printf को ना थोड़ा पुश किया राइट साइड में. So this printf is to the right of this else. This p is not under this ec. तो इसका मतलब क्या है ना कि अभी है ना, मैं है ना एग्जामिनर को कुछ बोलने का ट्राई कर रहा हूँ. मैं एग्जामिनर को क्या बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि देख भाई, ये जो printf है ना, ये इस पे डिपेंडेंट है और ये जो printf है ये इस पे डिपेंडेंट है, ऐसा. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल द एग्जामिनर. तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तुम ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों करेक्ट है. बट ऐसा लिखोगे तो शायद मार्क्स ज्यादा मिलेगा, ऐसा. ऑलराइट, एनीवे, नाउ आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू. अब तुमने ये क्वेश्चन कॉपी किया है. अब ये इतना कॉपी मत करो, ये देखो ये सब कॉपी मत करो. डायरेक्टली कॉपी दिस ब्लू कलर. ये ब्लू कलर के नीचे तुम लिखो और एंड अभी क्या करो, इसके नीचे ना तुमको ये दोनों इफ स्टेटमेंट लिखना है. ये और को नीचे तुमको ये दोनों इफ स्टेटमेंट लिखना है इधर. बट राइट इट इन इंडेंटेड फॉर्म. ओके, और फिर तुमको पता चलेगा कि तुमको समझ में आया है कि नहीं आया. कम ऑन, स्टार्ट. कॉपी दिस और एंड इसके नीचे रेड कलर कॉपी करो इन इंडेंटेड फॉर्म. स्टार्ट.
All right, so let's see whatever you wrote is correct or incorrect. Okay, so if you wrote this, that means you have understood what is indentation. अभी ध्यान दो, इफ यू डिड नॉट राइट दिस, अगर कॉपी नहीं किया तो बाद में करो, पहले सुनो ध्यान से, अगर नहीं सुनोगे तो तुमको समझेगा इंडेंटेशन किसको बोलते हैं. अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यू विल रियलाइज ये जो P है इट इज टू द राइट ऑफ दिस I. तो इसका मतलब दिस printf इज डिपेंडेंट ऑन दिस इफ. ये जो P है, ये जो P है, इट इज टू द राइट ऑफ दिस I. दैट मीन्स ये printf इस पे डिपेंडेंट है. बट नाउ नोटिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे तुमको इंडेंटेशन का मतलब समझ में आएगा. वो क्या है सुनो. ये जो इफ है ये वाला एंड ये जो इफ है, दे आर इन द सेम कॉलम. ओके, सी दे आर नॉट, दे आर, आई मीन दिस इफ इज नॉट टू द राइट, इज नॉट टू द राइट ऑफ दिस इफ. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, प्लीज नेक्स्ट चीज ध्यान से सुनना तो तुमको इंडेंटेशन का मतलब समझेगा. तो इसका मतलब क्या है? अगर ये वाला इफ इसके राइट में नहीं है, नहीं है, ओके, दे आर इन द सेम कॉलम, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इफ एंड दिस इफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आई रिपीट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब तुम बोलोगे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? तो सुनो, नाउ आई वांट यू टू आंसर माय क्वेश्चन. ओके, प्लीज अनम्यूट एंड आंसर माय क्वेश्चन. समझो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये मैं बोलता हूं. समझो ये फॉल्स है, फॉल्स है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. सिंपल, इतना सिंपल है. नाउ कम्स द क्वेश्चन. अगर ये ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अब कंपाइलर ये कंडीशन को चेक करेगा क्या? सो दैट इज माय क्वेश्चन. Will the compiler check this condition if the earlier condition is true? No. Yes or no? No. The answer is yes. The compiler will still check this condition. क्यों? क्योंकि ये वाले if का और ये वाले if का कोई लेना देना नहीं. They are not related to each other. They are two separate statements. Okay, ये और यही else का advantage होता है. जब तुम एल्स लिखते हो तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाँ, ये अगर ट्रू है तो मैं इसको क्यों चेक करूं, ऑलराइट, या इधर मैं क्यों जाऊं. बट दीज आर टू इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स. तो ये देखो, ध्यान से सुनो, ये ट्रू होने दो या फॉल्स होने दो, कुछ भी होने दो, कंपाइलर इसको चेक करेगा ही. ओके, इसको वो चेक करेगा ही. एंड दैट्स व्हाई दीज टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द सेम कॉलम. So I hope you understood this concept. Any doubts? Any doubts? All right. Copy the red color if you haven't. All right. Now, okay, now give the next setting, simple and compound statement. Simple and compound statement. ठीक है, सुनो, very 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 important. Now I'll tell you why it is important, where it is required. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना क्या होता है, जब वो प्रोग्राम लिखते हैं ना, many students while writing program, when they are writing if statement, when they are writing a for loop, they don't understand where to put braces. यानी इनको ये नहीं समझ में आता है कि ओपनिंग ब्रेस किधर आएगा, क्लोजिंग ब्रेस किधर आएगा, ब्रेसेस आएगा भी कि नहीं आएगा, ये इनको समझ में नहीं आता है. सो इफ यू कांट फिगर आउट वेदर टू पुट ब्रेसेस और नॉट टू पुट ब्रेसेस, तो उसका रीजन है ये सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. अगर तुमको सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो ये ब्रेस में हमेशा तुमको डाउट होगा. अब ये समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल. समझो मैंने ऐसा लिखा, इफ a ग्रेटर देन b, printf %a x इक्वल टू a. ठीक है, नाउ आई हैव सम क्वेश्चन. सो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव, सुनो. समझो ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू 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 ट्रू, तो मैं तुमको बोलता हूं printf एग्जीक्यूट होगा, x इक्वल टू a एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट होगा, ये मैं तुमको बोलता हूं. समझो ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
तो printf एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा। Now my question to you is x equal to a एग्जीक्यूट होगा क्या? Come on, tell me. हाँ। Condition is false, x equal to a एग्जीक्यूट होगा, so one answer is yes, others any answer? So the answer is हाँ होगा। ओके, x equal to a एग्जीक्यूट होगा। अब तुम में से कोई कोई बोलोगे अरे सर मगर a ग्रेटर देन भी तो फॉल्स है, तो x equal to a कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो मेरा तुमको रिप्लाई ये है कि here the indentation is misleading। मैंने जानबूझ के मिसलीडिंग इंडेंटेशन दिया है। वो इंडेंटेशन देख के तुमको क्या लगता है? तुमको ऐसा लगता है कि x equal to a is under this, बट एक्चुअली इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, एंड इंडेंटेशन डज नॉट चेंज द आउटपुट। तो तुम x equal to a को इधर भी लिखोगे ना, इधर सेम आउटपुट आएगा, तुम इधर लिखोगे सेम आउटपुट आएगा, इधर लिखोगे सेम आउटपुट आएगा। ये सेमीकोलन के बाद किधर किधर भी लिखो सेम आउटपुट आएगा इसके बाद। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ I want to bring both the statements under if? What if I want to bring both the statements under if? So now I will do one very simple thing. ये जो दो ग्रीन स्टेटमेंट्स है ना, इनको मैं डाल दूंगा ब्रेसेस में, खत्म, बात हो गया खत्म। ओके, नाउ लुक एट अ ग्रीन कलर। अब जब मैं बोल रहा हूँ लुक एट अ ग्रीन कलर, यानी तुमको ये देखने का, देखो यहां से लेके यहां तक। सो जब मैं ग्रीन कलर बोलता हूँ, डोंट इग्नोर द ब्रेसेस, ब्रेसेस भी ग्रीन में है, ऑब्वियसली ये दो तो ग्रीन में है ही। सो नाउ लुक एट अ ग्रीन कलर। अभी कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ग्रीन कलर विल एग्जीक्यूट। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, ग्रीन कलर विल नॉट एग्जीक्यूट। बात हो गई खत्म, दैट्स इट। एनी डाउट्स क्लियर? ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है सर सिंपल स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? हेडिंग तो आपने बताया ही नहीं, तो सुनो। एनी सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। आई रिपीट, एनी सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। तो जब मैं सिंगल स्टेटमेंट बोलता हूं, दैट कुड बी दिस, दैट कुड बी दिस, एनी सिंगल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। सो नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट? So a compound statement is a collection of one or more simple statements enclosed in the pair of braces. I repeat, a compound statement is a collection of one or more simple statements enclosed in a pair of braces. बस। तो ये जो तुमको पूरा ग्रीन कलर दिखता है ना, पूरा पूरा यहां से लेके यहां तक, मैं बोलूंगा ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। और कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर होता है वन और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ठीक है। अभी अगर तुमको ये समझा तो आंसर अ क्वेश्चन। मेरे को बोलो ये जो ग्रीन कलर है, ये जब मैं ग्रीन कलर बोलता हूँ पूरा, ये ब्रेसेस, ये प्रिंटेड, ये सब, ये जो ग्रीन कलर है ये सिंपल है या कंपाउंड है? बोलो, कम ऑन। कंपाउंड। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो इधर मैंने दो ब्रेसेस हटा दिया, दो ब्रेसेस हटा दिया, विल द रिजल्ट रिमेन सेम? विल द आउटपुट रिमेन सेम? Yes. यस। तो देखो इधर तुमको क्या समझना है, पहली बात तो ये कि कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट में ब्रेसेस के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट होगा, चलेगा। अगर ब्रेसेस है तो वो कंपाउंड कहलाएगा। बट एक और बात क्या समझना है तुमको, कि इधर तुमने ब्रेसेस निकाल दिया ना तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एनीवे ब्रेसेस के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो ब्रेसेस निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड, ये जो मैंने सिखाया ये सब अगर तुमको समझा ना, तो तुमको आज के बाद ये ब्रेसेस में कभी डाउट्स नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ओके, एनीवे आई डिक्टेट समथिंग, कुछ लिखते हैं। एनी डाउट्स? ठीक है, कम ऑन, राइट। पॉइंट नंबर 1, any single statement, single, any single statement is called simple statement.
Point number 2, a compound statement is a collection of one or more simple statements enclosed in a pair of braces. Point number 3, in the following examples, the green color, अगर तुम्हारे पास ग्रीन पेन है तो ही लिखो ग्रीन कलर, वरना कुछ और लिखो, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ऐसा. In the following examples, the green color is a compound statement. हाँ, अभी ये देखो, कॉपी दिस इज एग्जाम्पल 1. जब इसको कॉपी करोगे तो जो ग्रीन में है वो ग्रीन में ही डालना. ओके, कॉपी दिस इज एग्जाम्पल 2. अगेन जो ग्रीन में है वो ग्रीन में ही होना चाहिए क्योंकि तुमने ऊपर लिखा है ग्रीन कलर. ठीक है, सो कॉपी दीज 2 एग्जाम्पल्स. ये सेकंड एग्जाम्पल एंड ये फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, नाउ गिव द हेडिंग नंबर 5, स्विच स्टेटमेंट. अगर कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट. अब हेडिंग को नंबर 5, स्विच स्टेट. Now switch statement is something which is very 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 simple, but students को समझ में नहीं आता है. तो लेफ्ट साइड पे देखो, ये इसका जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मेट. ओके, एंड राइट साइड पे इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल. ठीक है, अच्छा, अभी ये स्विच स्टेटमेंट वर्क कैसे करेगा ये देखते हैं. ठीक है, तो ये देखो, अभी सबसे पहले जो भी तुमको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये जो वर्ड्स तुमको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ना, दे आर की वर्ड्स. सो स्विच, केस, ब्रेक, डिफॉल्ट, दे आर ऑल की वर्ड्स. ठीक है, अभी स्विच लिखने के बाद हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में एक एक्सप्रेशन लिखते हैं. सो जैसे मैंने इधर एक्सप्रेशन लिखा है a प्लस बी. अभी जरूरी नहीं है तुम a प्लस बी ही लिखो. यू कैन राइट ओनली a, यू कैन राइट ओनली b, यू कैन राइट a प्लस b, एनीथिंग. ओके, सो बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ स्विच, ऐसा बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ स्विच. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम वन और मोर केसेस लिखते हैं, केसेस लिखते हैं. एंड हर एक केस के आगे हम एक वैल्यू डालते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3. जैसे इधर वैल्यू 1 है 2, वैल्यू 2 है 5, वैल्यू 3 है 8, ऐसा. ओके, फिर हर केस के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक ब्लॉक लिखते हैं. ब्लॉक इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स. आई रिपीट, अ ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स. एंड आफ्टर द ब्लॉक एंड्स हम लिखते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट. तो इधर जैसे देखो, मैंने एक ब्लॉक लिखा ये वाला, फिर ब्रेक, फिर ब्लॉक, ब्रेक, ब्लॉक, ब्रेक, ऐसा. ठीक है, फिर हम एक डिफॉल्ट ब्लॉक लिखते हैं. सो फॉर विच वी राइट अ कीवर्ड डिफॉल्ट, एंड देन वी अगेन राइट सम स्टेटमेंट ओवर हियर, ओवर हियर. तो इधर मैंने देखो एक और स्टेटमेंट लिखा है, ऐसा ऐसा. एंड ये जो तुमको ब्लू स्टेटमेंट दिखता है, स्टेटमेंट एक्स, this statement X is not a part of the switch. I repeat, it is not a part of the switch. It is simply given for your better understanding. ये switch का part नहीं है. अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है तो वो देखेंगे. ठीक है,
अब इधर कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा वेदर द एक्सप्रेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 2। वो चेक करेगा इज a प्लस बी इक्वल टू 2। अगर ट्रू है, अगर ट्रू है, ट्रू, तो वो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा। अब ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक डज द वर्क ऑफ टर्मिनेटिंग द स्विच। ब्रेक क्या करेगा, स्विच को बंद कर देगा एंड कंपाइलर एक एंड कंपाइलर इधर से जंप करके, देखो इधर से जंप करके वो आ जाएगा ये ब्लू स्टेटमेंट पे। ओके, सो वंस अ पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट्स द रिमेनिंग केसेस आर स्किप्ड। अच्छा, समझो a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 2, so now obviously compiler will not enter this case, it will not even look over here। अब कंपाइलर क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा is a plus b equal to 5। if a plus b is equal to 5 तो वो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ऑलराइट, उसके बाद ब्रेक विल टर्मिनेट द स्विच, फिर से वो इधर आ जाएगा। So the basic logic is very simple. If a plus b is equal to any value, then the corresponding block will be executed. Break will terminate the switch and it will come over here. Let's say a plus b is not equal to 2, not equal to 5, not equal to 8. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, the compiler gets fed up and it executes the default block। तो अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। Writing the break after default, I mean writing the break in the default block is optional। ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, but a good programming practice is कि ये हमेशा तुम लिखो। Okay, that is a good practice। Few more things which you should know is, यहाँ कुछ syntactical rules है जो तुमको follow करना पड़ता है, और वो ये कि ये जो expression है a plus b और ये जो values है 2, 5, 8, हाँ, the expression and the values must have data type int or char, nothing else। I repeat, the data type should be int or char, nothing else। So what I'm trying to tell you is, chalo answer this question। Now a question is coming for your way। समझो a का वैल्यू है 5, okay, and b का वैल्यू है 2.6, हाँ, और इधर मैंने लिखा a प्लस बी। बोलो वैलिड है कि इनवैलिड? इनवैलिड। इनवैलिड क्यों इनवैलिड, रीजन भी बताओ। स्विच खाली इंट और कैर के लिए वैलिड रहता है। हाँ, तो a प्लस बी क्यों इनवैलिड है? ए प्लस बी फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू 7.6 है, वो फ्लोट हो जाएगा, तो ये इनवैलिड बन गया। सो दैट इज द रूल विच यू शुड फॉलो ओवर हियर। एनीवे, अभी ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए जगह छोड़ दो, ये बाद में कॉपी करना। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, वन मोर स्मॉल सिंपल थिंग, आज जो मैं बोलने वाला, इसे कंफ्यूज नहीं होना। आई एम टेलिंग दिस टू यू टू मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू। ईदर अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग और इग्नोर द नेक्स्ट थिंग। आई रिपीट, अंडरस्टैंड और इग्नोर। ये जो डिफॉल्ट पोर्शन होता है ना, ये पूरा ये डिफॉल्ट पोर्शन ना, ये सिंटैक्टिकली ऑप्शनल रहता है। आई रिपीट, सिंटैक्टिकली ऑप्शनल रहता है। यानी कंपाइलर बोलता है कि तुमको लिखने का लिखो, नहीं लिखने का नहीं लिखो। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यू विल हैव टू सी द प्रोग्राम। बहुत बार 90% ऑफ द टाइम्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम रिक्वायर्स दिस टू बी रिटन। तो प्रोग्राम में अगर जरूरत है तो लिखो, नहीं जरूरत है तो नहीं। ओके, नॉर्मली जो डिफॉल्ट ब्लॉक होता है ना, नॉर्मली वो एरर मैसेजेस डिस्प्ले करने के काम आता है, ऐसा। एनीवे, लेट्स मूव अहेड। नाउ गिव अ हेडिंग नंबर 6, व्हाइल लूप। लूप्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है लूप्स में कंट्रोल कहां से कहां जा रहा है। द वर्ड व्हाइल शुड बी इन लोअर केस। Okay, now what is a loop? So very simple. If you want to execute something in your program again and again, then you need a loop. You need a loop. अभी
व्हाइल लूप का जनरल फॉर्मेट ये है, ये जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट का मतलब ये खाली फॉर्मेट है इंग्लिश लैंग्वेज में। वंस अगेन द एक्सप्रेशन विच यू सी ओवर हियर, जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, इट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी वो कंडीशन है ट्रू और फॉल्स। और वो जो ब्लैक कलर में वो स्टेटमेंट दिख रहा है, इट कैन बी अ सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। आई रिपीट, इट कैन बी अ सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो इसीलिए मैंने तुमको सिंपल कंपाउंड सिखाया क्योंकि बार बार काम आएगा। अच्छा, अब ये वर्क कैसे होगा? तो वेरी सिंपल। कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन को चेक करेगा। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस एक्सप्रेशन पे आएगा और चेक करेगा इज द एक्सप्रेशन स्टिल ट्रू। अगर एक्सप्रेशन अभी भी ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब ऐसा बार 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 होते रहेगा। At one stage the expression will be false and that time the execution of the statement will stop. So there the while loop comes to an end. अभी आई एम श्योर किसी किसी को नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा सा सी प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम डिजिट्स को प्रिंट करेंगे फ्रॉम 0 to 9। So this is the program. Now take 10 seconds and quickly go through this program. Especially read the colored part carefully. Come on, quickly. ये program को अपने mind में read करो। All right. Now let's understand this program. Interesting है, ध्यान से सुनो। अब ये प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और वेरिएबल का नाम है डिजिट। वेरिएबल का नाम है डिजिट। Then what we do, we give some initial value to digit which is 0. उसके बाद अब ये देखो, ये इतने पोर्शन को देखो, इतने, और इसको है ना, इसको ये जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करो और मेरे को बोलो हु इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वाइल। चलो बोलो, हु इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वाइल, बोलो। Digit less Digit than less equal than to equal to 9. 9. वेरी गुड। एंड हु इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस वाइल, ये स्टेटमेंट है ना, ये कौन है इधर, बोलो। Printf and that plus plus digit whole bracket. Very good, very good. In fact, everything from this brace to this brace, the statement of this while is actually a compound statement. तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और ये पूरा स्टेटमेंट अंडर द वाइल, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। अगर ये ट्रू है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं, वर्किंग करते हैं। चलो, डिजिट इक्वल टू 0, व्हेन डिजिट इज इक्वल टू 0, हम कंपाइलर को एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज 0 लेस देन इक्वल टू 9। बोलो ट्रू और फॉल्स, फटाफट, ट्रू और फॉल्स। True. ट्रू। तो ट्रू है ना, तो कंपाइलर ऐसे अंदर आएगा, अंदर आके वो ये दो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो अभी क्या होगा, प्रिंटफ %d डिजिट वो डिस्प्ले करेगा 0। उसके बाद प्लस प्लस डिजिट क्या करेगा, वो डिजिट का वैल्यू 1 कर देगा। थोड़ा ध्यान से देखो, जो ग्रीन कलर है ना, उसने डिजिट को 1 कर दिया है, बट 1 अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है, 1 डिस्प्ले नहीं हुआ है। अब ये मत बोलो ये लूप है, तो इधर से घूम के कंपाइलर फिर से ब्लू कलर पे आएगा। अब तुम मुझे बोलो, अब चेक क्या होगा, इज, बोलो क्या इज, 1 less than equal to 9. वेरी गुड, विच इज ट्रू। तो फिर से कंपाइलर अंदर आएगा, एरो को देखो, प्रिंटफ %d डिजिट वो डिस्प्ले करेगा, वो डिस्प्ले करेगा 1 एंड प्लस प्लस डिजिट, डिजिट का वैल्यू कर देगा 2। अब ऐसा ना बार 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 होते रहेगा। सो डिजिट का वैल्यू हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, अभी ध्यान से सुनना। नाउ लेट्स कंसिडर अ स्टेज वेयर printf has displayed 8। समझो printf ने 8 डिस्प्ले कर दिया। प्लस प्लस डिजिट क्या करेगा, वो डिजिट को कर देगा 9। अब कंपाइलर घूम के वापस ऊपर आएगा, अब वो चेक करेगा इज 9 लेस देन इक्वल टू 9। बोलो ट्रू और फॉल्स, True. ट्रू और फॉल्स, बोलो क्या, True. ट्रू। तुमने ट्रू बोला, ठीक है।
तो अगर तुमने ट्रू बोला तो फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंटफ क्या करेगा, 9 को डिस्प्ले करेगा, प्लस प्लस डिजिट क्या कर देगा, डिजिट का वैल्यू कर देगा 10, डिजिट का वैल्यू कर देगा 10। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं। अभी ग्रीन कलर ने डिजिट को 10 कर दिया। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि नाउ आफ्टर डिजिट बिकम्स इक्वल टू 10, नाउ कंपाइलर घूम के ऐसा ऊपर इधर आएगा क्या वापस? अब ऐसे घूम के ऊपर आएगा क्या? आएगा सर। आएगा, आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आएगा। आएगा, आएगा तो ही तो पता चलेगा ना, अपने आप कैसे पता चलेगा? तो कंपाइलर घूम के इधर आएगा, फिर से चेक करेगा, इज 10 लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो अभी ये स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। इसके बाद अगर कुछ होता, इधर देखो मेरा माउस बटन क्या है, किधर है, इधर अगर कुछ होता तो वो डिस्प्ले होता, बट अभी कुछ नहीं है तो पूरा प्रोग्राम बंद हो गया। सो दिस इज हाउ द व्हाइल लूप वर्क्स। एनी डाउट्स क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, फ्यू मोर थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड। अभी इधर ये जो वेरिएबल डिजिट है ना, वेरिएबल डिजिट, ये डिजिट को बोलते हैं, ये डिजिट को बोलते हैं, राइट साइड पे देखो, इंडेक्स और लूप कंट्रोल वेरिएबल। अभी है ना, ये नाम देखते हैं, लूप कंट्रोल वेरिएबल इसको क्यों बोलते हैं? तो सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रियलाइज करोगे, इट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट, इट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट which decides whether the loop will continue or not. तो ये जो कंडीशन है ना, इसमें डिजिट डिसाइड करता है कि लूप आगे बढ़ेगा कि नहीं, और इसीलिए उसको बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि डिजिट का वैल्यू लूप को कंट्रोल कर रहा है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, एकदम 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 ध्यान से सुनना। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, वो समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनना। आज के बाद जब भी तुम कोई लूप वाला प्रोग्राम लिखोगे, whenever you write a program having a loop, so in that program you will normally find three expressions, three expressions: the red expression, the blue expression, the green expression. Now the question is, ये red expression क्या है? तो जो red expression है ना, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देता है। फिर जो ब्लू है ना, ब्लू, उसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशन वो एक्सप्रेशन होता है जो लूप कंट्रोल वेरिएबल को चेक करता है। और जो ग्रीन कलर है ना, उसको बोलते हैं अल्टरेशन। तो अल्टरेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो लूप कंट्रोल वेरिएबल को अल्टर करता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात तुमको समझना है वो ये कि ये जो तीनों एक्सप्रेशन है ना, तीनों ये लूप कंट्रोल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन उसको इनिशियलाइज करता है, कंडीशन उसको चेक करता है, अल्टरेशन उसको अल्टर करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली एक बात बताओ, in this program is it possible, not this program, in some other program, not this program, in any other program, is it possible that a while loop executes 0 times? अच्छा, बाय द वे एक बात बताता हूं, आज के बाद अगर तुमको कोई बोलता है ना कि ये while loop 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, 10 टाइम्स, तो वो एक्चुअली तुमको क्या बोल रहा है पता है? वो तुमको ऐसा बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है ना वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आज के बाद जब भी हम ऐसा बोलेंगे ना कि ये लूप 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसका मतलब एक्चुअली ऐसा है कि वो लूप का जो स्टेटमेंट है वो 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, सो माय क्वेश्चन वाज, इन सम अदर प्रोग्राम इज इट पॉसिबल दैट अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स 0 टाइम्स? यस और नो? यस और नो? Oh, sir, it will execute at least one time. The answer is Yes, yes. sir. Yes, the while loop may execute 0 times. For example, इधर ही तुमको दिखाता हूँ, देखो इधर ही तुमको दिखाता हूँ। समझो डिजिट का इनिशियल वैल्यू 10 होता है, ये देखो 10। तो अगर इनिशियल वैल्यू 10 होता तो पहली बार में ही वो चेक करता, इज 10 लेस देन इक्वल टू 9? आंसर फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। सो एक बात याद रखो, दैट अ व्हाइल लूप कैन एग्जीक्यूट 0 times if the condition is false from the beginning. And finally एक छोटी सी बात, इधर जो हमने प्लस प्लस डिजिट लिखा है ना, प्लस प्लस डिजिट, उसके बदले में वी कैन ऑल्सो राइट डिजिट प्लस प्लस, वी कैन ऑल्सो राइट डिजिट प्लस प्लस, वो भी चलेगा। ऑलराइट, एनी अदर डाउट्स? एनी डाउट्स? No, sir.
ठीक है ना, कॉपी द लेफ्ट साइड। चलो, जब लेफ्ट साइड कॉपी करोगे तो ये जो मैं एरोज बना रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉपी कर, कॉपी द लेफ्ट साइड, डोंट कॉपी द राइट साइड। फ्यू मोर सेकेंड्स। हाँ, अभी क्या करो, इधर साइड में लिखो इनिशियलाइजेशन, इधर लिखो कंडीशन और इधर लिखो ऑल्टरेशन। कम ऑन, ये भी लिखो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ऑल्टरेशन। अब इसके नीचे को नोट्स लिखते हैं, लिखो पॉइंट नंबर 1, चाहे तो हेडिंग दो नोट, हेडिंग दो नोट और लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो डिजिट इज कॉल्ड इंडेक्स और लूप कंट्रोल वेरिएबल। डिजिट इज कॉल्ड इंडेक्स और लूप कंट्रोल वेरिएबल। पॉइंट नंबर 2, if digit is initialized to 10, if digit is initialized to 10, then the while loop executes, the while loop executes 0 times, 0 times. ठीक है, now give the next heading number 7, for loop. Number 7, for loop. ओके, सुनो अभी फॉर लूप का ना, फॉर लूप इज ऑल्सो लूपिंग स्टेटमेंट। पहली बात ये कि ये भी लूपिंग स्टेटमेंट है, जिसका जनरल फॉर्मेट ये होता है, फॉर E1 सेमीकोलन E2 सेमीकोलन E3 एंड देन स्टेटमेंट। अब एक काम करो, ये जनरल फॉर्मेट पहले कॉपी कर लो। कम ऑन, कॉपी दिस थिंग, कॉपी दिस जनरल फॉर्मेट। आई विल एक्सप्लेन यू, पहले कॉपी कर लो। ऑलराइट, अब होता क्या है कि फॉर लूप में ना, ये जो E1 है ना, जो तुमको ब्लैक कलर में दिख रहा है, that is normally an initialization. E2 is normally a condition and E3 is normally an alteration. और उसके आगे जो रेड कलर में तुमको स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये वाला, दिस स्टेटमेंट कैन बी सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, आई एम श्योर यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, तो अब हम एक एग्जांपल करेंगे। Now the best way of understanding things is to understand the differences. तो अब हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम करेंगे जो हमने बस अभी 2 मिनट पहले किया था, बट नाउ विल डू दिस प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। तो कम ऑन, राइट साइड पे ये जो क्वेश्चन ब्लिंक हो रहा है, इसको कॉपी करो।
write a C program to print digits from 0 to 9. Copy the question. All right. अब ये वो प्रोग्राम है जो हम करने वाले हैं. Okay. Now this program will also display digits from 0 to 9. Now what I will do is I'll explain you the working of the for loop और उसके बाद तुम्हें मुझको कुछ बताना है, तुम्हें एक चीज का आंसर देना है, इसलिए ध्यान से सुनो. तो अभी देखो इधर मैंने डिजिट को डिक्लेयर किया है बट इनिशियलाइज नहीं किया है. अब मैंने फॉर चालू किया. ध्यान देना बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विद द फॉर लूप. सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन लिखा डिजिट इक्वल टू 0. देन पुटिंग द सेमीकोलन इज कंपलसरी. फिर मैंने कंडीशन लिखा डिजिट लेस देन इक्वल टू 9 सेमीकोलन एंड देन प्लस प्लस डिजिट लिखो या डिजिट प्लस प्लस लिखो, दोनों एक ही है. नाउ हाउ थिंग्स विल वर्क ओवर हियर. तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले वो ये ब्लैक कलर को एग्जीक्यूट करेगा एंड नाउ डिजिट विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0. तो सबसे पहले ये अंडरलाइन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा. Now the compiler will come to the green color, that means digit less than equal to 9. और अब वो चेक करेगा is 0 less than equal to 9. Obviously condition true है तो कंपाइलर नीचे आके printf एग्जीक्यूट करेगा. तो printf क्या करेगा, 0 को डिस्प्ले करेगा. इसके बाद क्या होगा, इधर से घूम के कंपाइलर जाएगा प्लस प्लस डिजिट पे. तो डिजिट का वैल्यू हो जाएगा 1. डिजिट का वैल्यू हो जाएगा 1. अब उसके बाद क्या होगा, आफ्टर द ब्लू कलर कंपाइलर वापस घूम के आएगा कंडीशन पे, इनिशियलाइजेशन पे नहीं, कंडीशन पे. और अब वो चेक करेगा, चलो क्या तुम मेरे को बोल सकते हो, अब वो क्या चेक करेगा, इज बोलो क्या, इज 1 लेस देन इक्वल टू 9. क्योंकि अभी डिजिट का वैल्यू 1 है तो फिर से कंडीशन ट्रू है. अभी यही साइकिल कंटिन्यू होगा. ओके. अभी मैं क्या करूंगा, ये देखो, इसको मैं बोलूंगा ग्रीन कलर, इसको रेड कलर, प्रिंटफ को रेड कलर और इसको ब्लू कलर. सो नाउ द ग्रीन कलर इज ट्रू. तो कंपाइलर विल कम डाउन एंड एग्जीक्यूट द रेड कलर. फ्रॉम रेड कलर इट विल गो टू ब्लू कलर. फ्रॉम ब्लू कलर it will go to green color. Again, if green color is true, the same cycle will continue. At one stage, this green color will become false. So when this green color becomes false, the loop stops. यानी अब वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. जब ये false होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अच्छा, अब एक दो चीजें अपने को समझनी है. पहली बात तो ये कि ये पूरे वर्किंग में ना थोड़ा ध्यान से देखो, ये ब्लैक कलर से एक ही बार एग्जीक्यूट होता है. So the black color, I mean the initialization is not a part of the cycle. I repeat, the initialization is not a part of the cycle. Now I have a question for you guys. मुझे एक बात बताओ, is the working of for loop same as while loop? Yes. 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 Okay. The working of for loop and while loop is exactly same. It's just that the for loop is a more compact version of while loop. I repeat, the for loop is a more compact version of while loop. For loop में क्या होता है, तीनों एक्सप्रेशन एक ही जगह पे आता है तो थोड़ा प्रोग्राम छोटा दिखता है, जैसे कि तुमको इधर दिखाई दे रहा होगा. So now copy the program on the right hand side. एंड वो प्रोग्राम में जो एरोज है ना उसको कंपल्सरली कॉपी करा था. एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई डाउट है तो पूछो वरना स्टार्ट कॉपिंग.
The arrows are important. Copy the arrows. All right. Take a screenshot if you haven't copied. Okay, let's move on to a very, very, very important topic, functions. Chalo, लिखो. Number 8, functions. अच्छा, functions क्यों important है? तो क्या होता है ना, ध्यान से सुनना. Whether you want to be good at Java or data structures, whether you are doing Java or data structures, दोनों में ना प्रोग्राम में lots and lots and lots of functions will be used. In fact, Java में हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास का डेफिनेशन ही ये है, a class is a group of variables and functions. तो होता क्या है कि अगर तुमको फंक्शंस ठीक से नहीं समझा ना, तो यू विल कीप वंडरिंग कि अरे कंपाइलर इधर से इधर जा रहा है कि इधर से उधर जा रहा है कि किधर से किधर जा रहा है. वो जो फ्लो ऑफ लॉजिक है ना, वो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा अगर तुमको फंक्शंस नहीं आता है तो. Now what is a function? So very simple. A function is just like a program. A function is just like a program, okay, which takes some input and gives back some output. तो function basically क्या करेगा, तुमसे कुछ value लेगा, argument लेगा, parameter लेगा और तुमको कुछ ना कुछ वो output देगा. Functions are broadly divided into two categories. एक होता है built-in functions, also called library functions, और दूसरा होता है user defined functions. So library functions are those functions which are already built inside the compiler. For example, sqrt, POW, they are all library functions. Why? Because they are built inside the compiler. अब yesterday मैंने तुमको user defined का मतलब लिखवाया था. तो user defined जब हम बोलते हैं तो user का मतलब होता है programmer and defining का मतलब होता है creating और writing. So user defined functions are those functions which are created, written by the user. So in this topic, we will obviously study the user defined functions, that how to create such functions, how to use them. Okay. अब इसके लिए directly हम एक question start करेंगे. अब एक question क्या बोलता है? ये बोलता है using a function, write a C program to find maximum of two given unequal integers, parameter और argument passed, value returned. अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन में ना लेट्स इग्नोर द रेड कलर. रेड कलर को ना इग्नोर करो, वो मैं बाद में बताऊंगा. लेट्स पे अटेंशन टू द ब्लैक कलर. तो ब्लैक कलर क्या बोलता है कि भाई तुम्हें प्रोग्राम लिखो, वो प्रोग्राम में ना यूजर से क्या ना तुम दो अनइक्वल इंटीजर्स लो और उसका मैक्सिमम डिस्प्ले करो. बट ये करते वक्त तुमको एक फंक्शन यूज करना है. एनी डाउट्स विद द क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Any doubts? ठीक है. So here is the program. Now in this program, there are a total of two functions. Now which two? तो पहला तो है फंक्शन मेन. ये जो मेन है ना, मेन वो भी एक फंक्शन ही है. और दूसरा है फंक्शन मैक्स. So there are two functions, main and max. ये जो मैक्स है ना, इसको तुम मेन के ऊपर लिखो चलेगा, मेन के नीचे लिखो चलेगा. सो करंटली हमने इसको मेन के नीचे लिखा है. ऑलराइट, मेन के बाद लिखा है. अब इधर जो ग्रीन कलर है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके. जो रेड कलर है ना, उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल. एंड जो ब्लू कलर है, ये पूरा ब्लू कलर, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन और सिंपली फंक्शन. तो आज तक हम जो फंक्शन बोलते थे ना, वो हम इसको बोलते थे, इसको. ऑलराइट. अच्छा, अब तुम क्या करोगे? यू विल कॉपी एवरीथिंग टिल हियर.
will start from here. You'll copy everything till here. लिखते वक्त ध्यान देना and same colors use करना. I repeat, same colors use करना. Okay. फिर इसके साइड में तुम लिखना फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन. इसके साइड में तुम लिखना फंक्शन कॉल और फंक्शन रेफरेंस. फिर इधर एक ऐसा एरो बना के लिखना फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन. ओके, स्टार्ट कॉपी. एनी डाउट्स अबाउट व्हाट टू कॉपी? कॉपी करते वक्त ध्यान देना सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. कम ऑन, स्टार्ट. All right. So I hope you have copied this. ठीक है. Now let's try and understand how it works. अगर कॉपी नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो and just pay attention to what I'm going to explain you. Things are very, 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 very difficult.
and very interesting. Okay, very difficult, very interesting. So please be very attentive. Okay. Acha, abhi let's understand how all this works. Okay. So just a minute, guys. Okay. So let's understand how this works. अब जब मैं सिखा रहा हूं ना, अपने माइंड में प्रोग्राम का आउटपुट भी थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है? Now in this program there are two functions, main and max. Main and max. अब होता क्या है, तुम्हारे प्रोग्राम में भले 1000 फंक्शंस है एंड भले वो 1000 फंक्शंस तुमने मेन के पहले लिखा है, मेन के पहले, फिर भी क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन. सो ये हमेशा याद रखना, एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन. ठीक है? तो अभी क्या होगा, मेन में सबसे पहले XYM डिक्लेयर होगा, फिर ये प्रिंटफ है ना, ऐसा मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा एंटर टू इंटीजर्स. समझो यूजर ने टाइप किया 8 5 8 5, तो स्कैनफ क्या करेगा, x को दे देगा 8, y को दे देगा 5. अब ये स्टेटमेंट आया m इक्वल टू मैक्स ऑफ तुम्हारे बुक में x, y. अब x का वैल्यू 8 है एंड y का वैल्यू 5 है, तो मैं लिख दूंगा मैक्स ऑफ 8, 5. नाउ आज के बाद ये जो रेड कलर है ना, इसको हम दो शब्दों में बोलेंगे, फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल. तो फंक्शन कॉल का मतलब होता है यू आर कॉलिंग द फंक्शन, you are requesting the compiler to execute the function, and while executing the function you are passing two values to the function. तो ये जो 8 and 5 है ना, ये तुम फंक्शन को देने वाले हो, ये दो वैल्यूज उसको देने वाले हो, and that is why this 8 and 5 they are called parameters, sometimes also called arguments. Parameters और arguments. तो अभी क्या होगा, देखो ये ना तुमने फंक्शन कॉल दिया, बी वेरी अटेंटिव इफ यू वांट टू डू वेल इन जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर. अब इधर से जंप करके, ये देखो इधर से जंप करके कंपाइलर जाएगा फंक्शन पे एंड अपने साथ वो 8 and 5 को लेके जाएगा. सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन. तो ये देखो ऐसे ऐसे. तो अब वो है ना इधर से जंप करके गया, इधर अपने साथ वो 8 and 5 को लेके गया था. अभी 8 and 5 को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए ना, तो इसीलिए ना हमने इधर वेरिएबल x and y को क्रिएट किया है. तो अभी क्या होगा, 8 विल गेट स्टोर्ड इन x, 5 विल गेट स्टोर्ड इन y. ठीक है? तो अभी x को 8 मिला, y को 5 मिला. अब कंपाइलर फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू करेगा. तो नाउ इट विल एंटर द फंक्शन, इट विल क्रिएट z. अब वो चेक करेगा इज 8 ग्रेटर देन 5, ट्रू, तो z को मिला 8, ऑब्वियसली एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न z. अब z का वैल्यू क्या है याद करो, तो z का वैल्यू 8 है, सो दिस विल बिकम रिटर्न 8. अब क्या होगा, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, वो दो काम करेगा. दो, पहला काम, इट विल टर्मिनेट द फंक्शन, इट विल टर्मिनेट द फंक्शन. दूसरा काम, अपार्ट फ्रॉम टर्मिनेटिंग द फंक्शन, इट विल सेंड द वैल्यू ऑफ 8 बैक टू द मेन. तो अभी क्या होगा, फंक्शन तो टर्मिनेट हो गया, अभी जो 8 है ना वो मेन को रिटर्न हो जाएगा. तो अब कंपाइलर क्या करेगा, ध्यान से सुनना. अब कंपाइलर क्या करेगा, यहां से जंप करके यहां आएगा, यहां से जंप करके यहां आएगा और अपने साथ 8 लेके आएगा. तो लुक एट दिस एनिमेशन, एंड 8 विल रिप्लेस दिस रेड कलर. रेड कलर का मतलब फंक्शन कॉल जो है ना वो 8 से रिप्लेस हो जाएगा. तो अभी m को क्या मिला, m को मिला 8. तो इधर आउटपुट क्या आया, maximum is 8. Any doubts still here? Any doubts still here? ठीक है. हाँ बोलो. Can you just repeat starting the part m equal to max का वाला? What exactly? Like वो कैसे उधर जंप करेगा, मतलब वो m equal to max किया, डायरेक्ट वो उधर जंप करेगा क्या वो फंक्शन पार्ट पे? हाँ, क्योंकि वो फंक्शन कॉल है ना, जो रेड कलर है वो फंक्शन कॉल है. तुमने अगर फंक्शन का नाम लिख के अगर पैरेंथेसिस डाला तो यानी फंक्शन कॉल है. तो जब भी कंपाइलर फंक्शन कॉल को देखेगा वो फंक्शन में जंप करेगा. ओके. अच्छा, सो यू अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स. अब एक काम करते हैं, इसके टेक्निकलिटीज में जाते हैं, यानी क्या ये कैसे लिखने का, सिंटैक्स क्या है, ऑल दोस थिंग्स. तो सबसे पहले ना ये ब्लू कलर की बात करते हैं, यानी लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन. अब तुम अगर फंक्शन डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो तुम रियलाइज करोगे फंक्शन डेफिनेशन में
there are only two things which are new to you. There are only two things which are new to you. तो उसमें से पहला चीज है फंक्शन हेडर और द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन हेडर नाम इसको बोलते हैं. तो ये नया है तुम्हारे लिए. और दूसरा नया चीज है ये रिटर्न स्टेटमेंट. ये ओके, ये इंट जेड तो तुमको पता है, डिक्लेरेशन है. इफ एल्स भी तुमको पता है. तो नया चीज क्या है, खाली ये और ये. अब एक काम करते हैं, पहले ये फंक्शन हेडर के बारे में डिस्कस करते हैं. सो सी दिस इज द फंक्शन हेडर. इसको पर्पसली मैंने 3 कलर में दिया है. पर्पसली मैंने 3 कलर में दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. अब इधर ये जो ब्लू कलर है ना, इंट, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप. ये जो ब्लैक कलर है ना, मैक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन नेम. एंड ये जो रेड कलर है ना, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट. सो बेसिकली अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो फंक्शन हेडर है, हेडर, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. 3 कंपोनेंट्स, द रिटर्न टाइप, द फंक्शन नेम, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन नेम व्हिच इज द सिंपलेस्ट. इधर है ना, देखो मैंने मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये फंक्शन मैक्सिमम फाइंड करता है. सम जो मैक्स के बदले में इधर मैंने लिखा मुंबई. मैक्स के बदले में इधर मैंने लिखा मुंबई. तो तुमको क्या लगता है, चलेगा कि नहीं चलेगा? आई मीन वैलिड और इनवैलिड? वैलिड. तो मुंबई लिखो, लंदन लिखो, कुछ भी लिखो, चलेगा. बट नॉर्मली क्या होता है, फंक्शन का जो नाम होता है ना, इट शुड कन्वे द वर्क विच इट इज डूइंग. तो इसीलिए मैंने नेम चूज किया मैक्स. ऑल्दो मैक्स के बदले कुछ और भी लिखो तो भी चलेगा. ओके, नाउ कम टू द आर्ग्यूमेंट लिस्ट. अब जो मैं बात बोलने वाला हूं ना, अगर तुमने ध्यान से सुना ना, तो तुमको फंक्शन हेडर में कभी डाउट्स नहीं आएगा. ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है ना, ये तुमको बताएगा कि फंक्शन क्या लेता है. एंड ये जो रिटर्न टाइप है ना, ये तुमको बताएगा कि फंक्शन क्या देता है. तो इधर देखो मैंने इंट एक्स इंट वाई लिखा है ना. तो ये एक्स एंड वाई है ना, इसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स और सो कॉल्ड पैरामीटर्स. सो बेसिकली फंक्शन जितना वैल्यूज लेता है, हर एक वैल्यू के लिए हम एक आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट. और वो आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, उसका डेटा टाइप लिख देंगे. तो 8 and 5 आर इंटीजर्स, इसलिए मैंने इधर 2 आर्ग्यूमेंट्स बनाया, एक्स एंड वाई, ऑफ डेटा टाइप इंट. एंड हर एक आर्ग्यूमेंट के बाद एक कॉमा आएगा, कॉमा, ऐसा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, द एंटायर रेड कलर. अभी जो इंट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप. अब बहुत लोगों को ना रिटर्न टाइप समझ में नहीं आता है. तो एकदम सिंपल है रिटर्न टाइप का. मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, ध्यान से सुनो. रिटर्न टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन. आई रिपीट, डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फंक्शन. याद करो, ये फंक्शन ने z को रिटर्न किया था, z को. वो z का डेटा टाइप क्या था, ये देखो इधर इंट था. तो इसीलिए हमने इधर इंट लिखा. सो इधर जो हम इंट लिखते हैं ना, तो उसका मतलब हम कंपाइलर को बोलते हैं कि ये फंक्शन जो वैल्यू देगा वो एक इंटीजर होगा, ऐसा. बाय द वे, अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ऐसा भी बहुत बार होता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो हम इधर है ना लिखते हैं वॉइड. जैसे कि हमने इधर लिखा वॉइड. अब ये लाइन को तुम अगर देखो ना, ये लाइन को, तो इधर मेन है ना, मेन वो फंक्शन का नाम है, जैसे मैक्स था. मेन कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है, तो इसीलिए खाली है. और मेन कुछ रिटर्न भी नहीं करता है, तो इसलिए हमने इधर वॉइड लिखा है. ओके, एनी डाउट्स टिल हियर? एनी डाउट्स? ठीक है. अब है ना, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा. अगर तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अगर तुमने आंसर कर दिया ना, यानी तुमको ये फंक्शन हेडर समझ में आ गया. अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, write a function to find sum of, write a function to find sum of 2 integers and 1 float. I repeat, write a function to find sum of 2 integers and 1 float. चलो, अगर तुमको सच में समझा तो मेरे को बोलो इधर फंक्शन का अप्रोप्रिएट नाम क्या होगा? Sum. इधर sum. Very good. It will take a total of how many arguments? Total. 3. Of which, what will be the data type of the arguments? int and float. 8 int float. Very good. Int float. Okay.
तो पहला दो इंट होगा, समझो इंट ए, फिर इंट बी, एंड तीसरा फ्लोट होगा फ्लोट सी। हाँ, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? फ्लोट। फ्लोट। वेरी गुड। कैसे मालूम पड़ा फ्लोट? वेरी गुड, बट कैसे मालूम पड़ा फ्लोट? सम ऑफ थ्री इंटीजर एंड फ्लोट इज फ्लोट। वेरी गुड। देखो अभी ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर हम एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, एकदम सिंपल। हम लिखेंगे रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, खत्म, और ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो ए प्लस बी जब तुम करोगे तो ए प्लस बी तो इंटीजर है, बट जब तुम प्लस सी करोगे तो फ्लोट हो जाएगा, तो इसीलिए रिटर्न टाइप हमने फ्लोट होगा, खत्म, सिंपल। ओके। अच्छा, अभी है ना, ये लाइन को देखो जिसको हमने इग्नोर किया था। लुक एट द क्वेश्चन, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पास्ड, वैल्यू रिटर्न। अब एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। ये पूरे प्रोग्राम में डिड वी पास पैरामीटर्स फ्रॉम द मेन टू द फंक्शन? यस। डिड द फंक्शन रिटर्न एनी वैल्यू? यस। यस। तो यही वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई तुम पैरामीटर भी पास करो और वैल्यू भी रिटर्न करो। तो ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है ना, देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मेन एंड द फंक्शन। यानी मेन फंक्शन को कुछ देता है एंड फंक्शन भी मेन को कुछ देता है, ऐसा। ओके। अच्छा, अभी फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में, सॉरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिस्टेक्स व्हिच स्टूडेंट्स डू इन द फंक्शन कॉल। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो फंक्शन कॉल लिखते हैं ना, तो वो है ना कभी कभी ऐसा लिखते हैं। अब देखो मैं नीचे लेफ्ट में क्या लिख रहा हूँ, नीचे लेफ्ट ऐसा लिखते हैं, m इज इक्वल टू मैक्स मैक्स इंट x कॉमा इंट y। तुमको सच में समझा तो बोले जरा एरर क्या है? डेटा टाइप नहीं लिख सकते। वेरी गुड। तो जब तुम फंक्शन कॉल लिखते हो ना, तो फंक्शन कॉल में ये डेटा टाइप नहीं आता है। फंक्शन कॉल में यू शुड राइट जस्ट द नेम्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। अब ये फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप ना, सिंपल बात है, इट इज एग्जैक्टली सेम एज द फंक्शन हेडर प्लस अ सेमीकोलन। ओके। तो ये जो फंक्शन हेडर है ये वाला, ओके, वैसे ही तुमको प्रोटोटाइप लिखना है, खाली तुमको इधर एक सेमीकोलन डाल देना है, खत्म। ऑलराइट। एंड प्रोटोटाइप हमेशा मेन के ऊपर आएगा। ऑलराइट। फाइनली लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में तुमको खाली एक चीज समझना है, वो ये कि रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। यानी अगर तुमने ऐसा कुछ लिखा, रिटर्न ए कॉमा बी, तो ये इनवैलिड है क्योंकि इट कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैंने लिखा रिटर्न ए प्लस बी, तो ये वैलिड है क्या? यस Yes. सर। Yes. Yes, क्योंकि a plus b is a single value, it is not multiple values. Okay, तो रिटर्न स्टेटमेंट जब भी लिखोगे तुमको ऐसा लिखना है, रिटर्न, और रिटर्न के बाद एनी वन वैल्यू, दैट वन वैल्यू कुड बी एन एक्सप्रेशन, तो वो चलेगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फंक्शंस। अभी एक कुछ कुछ थोड़ा लिखते हैं, लिखो पॉइंट नंबर, हेडिंग दो नोट। अब नोट के नीचे लिखो, नोट में ना नंबर वन पॉइंट डालो, और अभी ना देखो ऐसा लिखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ना पूरा लाइन कॉपी करो, ये ध्यान से सुनना। फिर इधर एरो डाल के लिखना रिटर्न टाइप, फिर ये मैक्स के नीचे एरो डाल के लिखना फंक्शन नेम, फिर ये जो रेड कलर है ना इंट एक्स कॉमा इंट वाई, उसके नीचे एरो डाल के लिखो आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट। कम ऑन, डू दैट।
Alright guys, so I hope you wrote that much. अब इसके नीचे पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, तो पॉइंट नंबर 2 में ऐसा लिखो, द रिटर्न स्टेटमेंट can return only one value. हाँ, अब तुम क्या करो, ये कॉपी करो ये, और इसके साइड में लिखो इनवैलिड, ये कॉपी करो ये, और इसके साइड में लिखो वैलिड. व्हाट डू दैट? invalid, valid. Any doubts? All right, now let's start the last topic of the day. Is adding arrays. Is adding arrays. ठीक है, अब इधर हमको मेन ये सीखना है कि हाउ टू क्रिएट एन एरे एंड हाउ टू ट्रैवर्स एन एरे. ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है गोइंग थ्रू. तो अपने को बेसिकली ये सीखना है कि एरे कैसे बनाने का, and how to go through the array or how to process the array. So now if you want to create the array, it is very simple. It is very simple. तुम क्या करो, कोई भी एक डेटा टाइप लिखो, let's say int. Okay, array का नाम लिखो, let's say x. All right, array का साइज लिखो, so square bracket में हम उसका साइज लिखेंगे. Let's say the size is equal to, let's say the size is equal to 3. Okay, you can keep the size anything. So this is the way in which you declare the array. और ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं array declaration. I repeat, इसको बोलते हैं array declaration. Okay. अभी अगर तुम चाहो तो इधर तुम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो, तो तुम लिखो equal to and then in braces you put some values separated by comma. So you will write 11, 22, 44, you close the braces and semicolon. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको बोलते हैं array declaration and initialization. So once again I am telling you कि जो int है इसके बदले कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, int, float, char, anything. तो ये डेटा टाइप है, ये array का नाम है जो कुछ भी हो सकता है, ये array का साइज है, it can be any integer. Okay, and उसके बाद ये सब वैल्यूज. You could have put the semicolon here also. तो फिर ये खाली array declaration होता, initialization नहीं होता. Any doubts here? अच्छा, अभी तुमको शायद ये तो पता होगा कि array में क्या होता है. There is something called the concept of index or position. अब इसका क्या मतलब है, तो समझो ये array x है. ओके, तो ये array x में अभी तुमने 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं. जस्ट अ मिनट, ये जो array x है इसमें तुमने अभी 3 एलिमेंट्स को स्टोर किया है. ओके, सो दिस इज द array x जिसमें you are stored 3 elements. All right, so there are 3 elements. So पहला एलिमेंट है 11, दूसरा है 22 और तीसरा है 33. ऐसा 3 एलिमेंट को तुमने स्टोर किया है. ओके, अभी लेट्स से यू वांट टू एक्सेस 22. तो अगर तुमको 22 को एक्सेस करने का है तो तुम क्या करोगे, तुम ऑब्वियसली x तो लिखोगे, x क्योंकि एरे का नाम x है. बट उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि x तो जो एरे है उसमें 11 भी है, 22 भी है, 33 भी है. तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, इनफैक्ट सी एंड जावा दोनों में, सी, जावा, पाइथन सब में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज एट पोजीशन 0. पोजीशन बोलो या इंडेक्स बोलो, एक ही है. एंड उसके बाद एवरी एलिमेंट हैज इंडेक्स 1 मोर देन द प्रीवियस एलिमेंट. तो ये 22 का इंडेक्स है 1, 33 का इंडेक्स है 2, ऐसा. ओके, सॉरी 22 लिख दिया मैंने गलती से. 33 का इंडेक्स है वन मोर मिस्टेक,
इधर 44 है, मैंने गलती से 33 लिखा था. ओके, सो एनीवे, so basic concept is the first element is always at position 0 and thereafter the position number increases by 1. So if an array has n elements, I repeat, if an array has n elements, तो जो लास्ट पोजीशन नंबर होगा वो हमेशा होगा n-1 और फर्स्ट पोजीशन वो ऑब्वियसली जीरो होगा, वो ऑब्वियसली जीरो होगा. एनी डाउट्स क्लियर? अच्छा, अब इधर अगर तुमको 22 को एक्सेस करना है, 22 को, तो तुम लिखोगे कैसे? ऐसे देखो, तुम लिखोगे x एंड स्क्वायर ब्रैकेट में तुम लिखोगे 1 और इसको बोलते वक्त कैसे बोलोगे? बोलते वक्त बोलोगे x ऑफ 1. तो आज के बाद क्या होगा, जब हम एक्चुअली जावा या डेटा स्ट्रक्चर्स करेंगे तो बहुत बार मैं बोलूंगा x ऑफ i, x ऑफ j. तो अगर मैं x ऑफ i बोलता हूं तो लिखते वक्त ऐसा नहीं लिखना x ऑफ i, ऐसा नहीं लिखते वक्त तुम ऐसा लिखोगे x स्क्वायर ब्रैकेट i. तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दैट एलिमेंट ऑफ x विच इज एट पोजिशन i. ओके, अब तुमको डिक्लेरेशन तो समझ में आ गया, डिक्लेरेशन कैसे करने का, पोजीशन क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, वी विल सी हाउ टू ट्रैवर्स एन एरे और हाउ टू प्रोसेस एन एरे. बाय द वे, ट्रैवर्स का मतलब होता है ट्रैवलिंग. तो नाउ विल सी हाउ टू ट्रैवल, how to go through an array or how to process an array. अभी एक सिंपल काम करते हैं. लेट्स से you want to display all the elements of the array x. तो तुमको है ना मॉनिटर पर डिस्प्ले करने का 11, 22, 44. तो उसके लिए तुम क्या करोगे? एक फॉर लूप लिखोगे. इनफैक्ट तुमको कभी भी कोई एरे को प्रोसेस करने का है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर लूप होता है. स्टैंडर्ड फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n. बाय द वे, ये x में कितना 3 एलिमेंट है ना, तो हम बोलेंगे n ओवर here इज इक्वल टू 3. n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे x एंड i प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन कंडीशन ऑल्टरेशन. एंड इसके नीचे जो तुमको चाहिए वो स्टेटमेंट लिखो. फॉर एग्जाम्पल मुझे डिस्प्ले करने का है तो मैं लिखूंगा printf %d x ऑफ i, x ऑफ i. ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा. एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो. अभी हमने फॉर लूप जो सभी किया था तो कोई और इजीली समझ में आना चाहिए. अब इधर क्या होगा, सबसे पहले i विल बी इनिशियलाइज टू 0. अभी n का वैल्यू 3 है, ये मत भूलना. तो अभी इधर चेकिंग होगा, इज 0 लेस देन 3. ट्रू. तो कंपाइलर नीचे आके printf को एग्जीक्यूट करेगा. printf में डिस्प्ले होगा x ऑफ 0 यानी 11 डिस्प्ले होगा. अब printf के बाद कंपाइलर घूम के आएगा i प्लस. तो i का वैल्यू 1 हो गया. अब वो इधर आएगा, इज 1 लेस देन 3. ट्रू. चलो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं. कंपाइलर नीचे आया, x ऑफ 1 डिस्प्ले हुआ विच इज 22. अब वो घूम के आया i प्लस, i का वैल्यू 2 लेस देन 3. ट्रू. कंपाइलर नीचे आया, printf ने डिस्प्ले किया x ऑफ 2 विच इज 44. ऊपर गया i प्लस प्लस 3. इज 3 लेस देन 3? फॉल्स. 3 लेस देन 3 फॉल्स. तो printf रुक गया. तो बेसिकली अगर तुम्हारा ध्यान था तो तुमने रियलाइज क्या रहेगा कि printf इधर टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ. चलो बोलो, आंसर द क्वेश्चन, अनम्यूट एंड आंसर. द printf executed how many times? 3 times. Why 3 times? Because there are 3 elements in the array. देखो इधर हमने क्या किया ना, अगर तुम थोड़ा ध्यान, अब मेरे माउस पॉइंटर को थोड़ा ध्यान से देखो. इधर हमने क्या किया ना, ये फॉर लूप ने बेसिकली क्या किया, इट बेसिकली वेंट थ्रू द एरे. द फॉर लूप स्टार्टेड एट पोजीशन 0 क्योंकि हमने i इक्वल टू 0 लिखा था, एंड 0 से वो 1 पे गया, 1 से वो 2 पे गया. तो ऐसे फॉर लूप ने ना बेसिकली ये एरे को ऐसा ट्रैवर्स किया. आई रिपीट, उसने ऐसा गो थ्रू किया. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर ट्रैवर्सिंग द एरे, वी आर प्रोसेसिंग द एरे. ओके. अच्छा, एक सिंपल बात, सिंपल है, एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनना. समझो
मैं ना इधर इनिशियलाइजेशन नहीं करता, खाली डिक्लेरेशन करता, यानी मैं खाली ऐसा इंट इंट एक्स ऑफ 3, ठीक है। यानी मैंने एरे तो क्रिएट किया है बट वो एरे अभी खाली है, यानी एरे अभी ऐसा दिख रहा है ऐसे, ओके। यानी एरे अभी एम्प्टी एम्प्टी, ओके। अभी समझो मेरे को यूजर से इसका वैल्यूज लेना है, यानी एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, ये जो वैल्यूज इधर आने वाला है ना वो यूजर से फिल करवाना है। अब तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, कम ऑन, कैन यू आंसर द क्वेश्चन, कैन यू आंसर द क्वेश्चन। मेरे को ये वैल्यूज यूजर से लेना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी इफ यू कैन नॉट आंसर दिस, यानी तुमको 100% नहीं समझा है, एक सिंपल बात ना समझ लो, whenever you want to go through an array, I repeat, whenever you want to go through an array blindly, ऐसा आंख बंद करके, I repeat, आंख ऐसा बंद कर लो और आंख बंद करके ना तुम ये वाला फॉर लूप लिखो। ये जो फॉर लूप है ना, इट विल ऑलवेज टेक यू थ्रू द एरे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, नो मैटर व्हाट वर्क यू वांट टू डू। तो अगर तुमको एलिमेंट्स यूजर से रीड करने का है, मैं सेम फॉर लूप लिखूंगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हाँ बोलो, अब इसके नीचे क्या लिखूंगा, बोलो। scanf इंस्टेड ऑफ printf मैं लिखूंगा scanf, तो scanf %d, ओके। फिर से इधर आएगा x ऑफ i, खाली एक चेंज मत बोलो, scanf में हम इधर हमेशा एम्परसेंड डालते हैं एज अ सिंटैक्स, बस। अब ये कैसे वर्क करेगा, तो इसका खाली एक एग्जीक्यूशन लेता हूं, एकदम सिंपल है, ये देखो। पहले i का वैल्यू 0 होगा, ओके, 0 इज लेस देन n, आई मीन 0 इज लेस देन 3, तो कंपाइलर scanf पे आएगा। जब scanf पे आएगा तो होगा क्या, वो जो आउटपुट स्क्रीन होता है ना, आउटपुट स्क्रीन टर्बो सी प्लस प्लस में जो ब्लैक कलर का होता है, वहां ना ऐसा कर्सर ब्लिंक करेगा, ऐसा कर्सर ब्लिंक करेगा। समझो यूजर ने उधर टाइप किया, समझो तो यूजर ने टाइप किया 9, तो स्कैनफ क्या करेगा, जो 9 है ना, दैट 9 विल बी असाइंड, दैट 9 विल बी स्टोर्ड इन एक्स ऑफ आई। अब आई का करंट वैल्यू क्या है, 0, तो 9 मिल जाएगा एक्स ऑफ 0 को, ऊपर देखो ऊपर, तो 9 इधर आ गए, बस खत्म। वैसे एक्स ऑफ 1 रीड होगा, एक्स ऑफ 2 रीड होगा। एनी डाउट्स लियर, एनी डाउट्स, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, कॉपी एवरीथिंग टू द राइट ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन तुमको दिखता है ना, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट, ये लाइन के लेफ्ट में जो तुमको दिखता है ये पोर्शन, इसको कॉपी। ठीक है, अब इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, कॉमन राइट एंड नोट लिखो। whenever you want to whenever you want to ठीक है, whenever you want to go through the array from beginning to end, whenever you want to go through the array
from beginning to end. Write the above for loop. Write the above for loop blindly. ये word लिखो blindly. उसको underline भी करो blindly. All right, guys. So here we end our C language revision lecture, refresher lecture. अगर तुमको ये लेक्चर समझ में आ गया तो ट्रस्ट मी जावा में एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में तुमको हार्डली कोई डाउट्स आएगा. So now we'll meet next week. When you are attending the next lecture, please see to it that you revise the first lecture. यानी जो भी जावा है या डेटा स्ट्रक्चर है उसको प्लीज रिवाइज करना so that you understand everything properly. All right. Any doubts? Any doubts? Okay, so that's it for today. Thank you.